So control and coordination में बच्चा, we are going to study about control and coordination in plants as well as in animals. Yes, Virok, it is a long chapter, but not more than, it will not more like, it will not need more lectures than the one we have in life process. Life process is much longer than control and coordination. समर बच्चा, जून बैच स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me at the end of the lecture. We will discuss that. We can discuss, okay? If you have any doubt, we will discuss. So movement in plants. First, we are going to start with control and coordination in plants, and then we will be discussing about control and coordination in animals. बच्चा, control and coordination की आप अगर बात करते हो, if you are talking about control and coordination, generally in animals or human beings, it is all related to two things: the nervous system, that is brain, and the endocrine system, that is hormonal system, जो hormone release करता है. तो उसके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. बट इफ यू टॉक अबाउट प्लांट, यहाँ पे मेजर रोल है स्टिमुलस का, चेंजेस इन एनवायरनमेंट का, एंड हॉर्मोन्स का. So we are going to discuss what all movements occur in plants, what all hormones there are there in plants. Yes, there will be gibberellin, auxin, cytokinin. These are all. बच्चा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, बट उसको अलग से हम लोगों ने रख दिया, बिकॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंक्लूड्स नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम. तो उसको अलग से डिफरेंशिएट कर दिया. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस ओनली. सो अगर आप मूवमेंट इन प्लांट्स की बात कर रहे हो बच्चा, तो देयर कैन बी द मूवमेंट, देयर कैन सेवरल मूवमेंट्स दैट आर शोन थ्रू द प्लांट्स. हम लोग बहुत सारी मूवमेंट डिस्कस करेंगे. वी विल सी वीडियो ऑन दीज मूवमेंट्स एज वेल. सबका वीडियोस भी मैंने लेके रखा है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. But how movement in plant, it is different from movement in animals? Can you tell me how is it different? The movement that we see in plants, it is different from the one that we have in animals. Yes, very good. Plants, they can't move. They can only move their parts. They cannot, they are stationary. They can't move from one place to another. That is, they cannot show locomotion. Yes, they cannot locomote. They cannot show locomotion. They cannot move from A point to B point. They're stationary. They're fixed at one point. Yes, animals can move from one place to another, while plants cannot. So this is a basic difference in the movement that a plant can have or an animal can have. So movement in plants, in spite of being rooted at one place, the plants, yes, they show different types of movement, and such movements are generally in response to a particular stimulus. The plants, they show particular movement in response to a particular stimulus. Now, what is stimulus or what is stimuli? Stimulus is any change in the environment. It is any change in the environment which produces a reaction or a response in plant. So any external change, if that plant, it is going to be, it is going to face or feel a particular change in its environment, that environment will produce, or that change in the environment, it produce a particular reaction in a plant. A plant will show a reaction towards that change, and that is known as the response in plants. The reaction is known as response, while the change in the environment, it is known as the stimulus. So plants, they show movement. They show several kinds of movement that will be according to, or that will be in form of a response to a particular change in the environment. So they don't move from one place to another, but yes, they can show several movement in response to particular
change in environment, or you can say in response to particular stimuli. So we have different types of plant movement, that is classification of plant movements. Plants, they show different types of movements. Note it down and let me know once you're done with this slide, the first one. Done? Yes, bacha, you have to note down the whole table of plant movement. बहुत बड़ा नहीं है, just एक word ही है. So this is classification of plant movement. Classification of plant movements. Different types of movements in plants. So majorly plant movements, they are classified into two types, which are movement of locomotion and movement of curvature. So word से आपको समझ में आ जाएगा. Movement of locomotion में what happens? The whole plant body moves from one place to another. अब इसमें प्लांट, पूरा प्लांट ऐसे मूव कर रहा है ऐसा नहीं होगा. मतलब प्लांट्स के अंदर बच्चा एल्गी भी आते हैं. सो एल्गी के कुछ सेल्स मूव कर रहे होंगे, बिकॉज एल्गी कुछ यूनिसेल्युलर और एल्गी भी होते हैं. सो वो पूरा पूरा यूनिसेल्युलर एल्गी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है, तो दैट इज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. सो व्हेन होल पार्ट ऑफ प्लांट और अ सेल, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है सिर्फ वो मूव कर रहा है, दैट इज क्लासिफाइड अंडर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, देन यू विल गेट टू नो. ये सब क्लियर हो जाएगा, बट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट. So movement of locomotion is when the whole plant or the whole cell of the plant, or you can say the whole cytoplasm of the plant, it is moving. It is known as movement of locomotion. And when सिर्फ plant का एक particular part move कर रहा है, that is known as movement of curvature. That is known as movement of curvature. When only a part of a certain part of plant it is moving, it is known as movement of curvature. So movement of locomotion when whole plant body or a whole plant cell or cytoplasm it is moving, and movement of curvature when a particular part of plant it is moving, and it is showing movement of curvature. Now again, movement of locomotion and movement of curvature, they are divided into two types: autonomous movements and paratonic or the tactic movements. Autonomous movements or paratonic or tactic movements. Autonomous movements can be of three types: ciliary, amoeboid, and cyclosis. And paratonic or tactic movements, which is also known as induced movements, they are of several types like chemotactic, phototactic, or thermotactic. So what is the basic difference between autonomous movement and paratonic or the tactic movements? But the autonomous movements are the spontaneous movements. It generally happens because of some internal stimulus. Changes internal body में हो रहे हैं. So उसके वजह से अगर कुछ movement होता है, that is spontaneous movement or autonomous movement. But if changes they are taking place because of external stimulus, it is known as paratonic or the tactic movements. So internal stimulus में अगर पूरा body move कर रहा है, it will be under autonomous movement of locomotion. And अगर सिर्फ पूरा body move कर रहा है according to the external stimulus, it will be paratonic or tactic movement of locomotion. Again, अगर सिर्फ एक body part move कर रहा है, but that will be because of internal changes, it will be autonomous movement of curvature. And अगर एक body part move कर रहा है because of external stimulus, it will be paratonic or the tactic movement of curvature. So autonomous movement में there can be variation movement, there can be growth movement. Growth movement can be of
Three type: hyponasty, epinasty, and nutritional. And tropic movement can be of phototropic, geotropic, thermo, chemo, hydro, thigmotropic. And bacha, the nastic movement can be of three type: nixtinastic, seismonastic, thigmonastic. So ये दो टाइप्स हैं ऑटोनॉमस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के, एंड दे दो टाइप्स हैं पैराटोनिक और टेक्टिक मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर के, एंड दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज गिवन बिलो लाइक दिस. बच्चा ऑटोनॉमस और पैराटोनिक में बेसिक डिफरेंसेस: ऑटोनॉमस बिकॉज ऑफ सम इंटरनल स्टिमुलस, the movement it will be because of some internal stimulus, while paratonic or tactic movements में बच्चा the stimulus will be of external type, कुछ बाहर change होगा environment में. Okay, so movement of locomotion में the whole body of plant it is moving, while movement of curvature में only certain parts of plant are moving. Autonomous में because the movement these are the movements because of internal stimulus, and paratonic is because of external stimulus. बच्चा ये सारी चीजें अभी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. जस्ट नोट इट डाउन. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल एंड इट विल बी क्लियर टू यू. Tanmay, I will discuss all the things in detail. Can you please wait? We will discuss everything one by one. I will provide you examples as well. So just let me know once you are done with this classification, with this table. We're going to discuss about all these things in detail. One by one, we will discuss all the things. I'll provide you examples as well. Yes, all movements are basically due to stimulus only because of change in environment. Internal environment में change है तो autonomous movement हो जाएगा, also known as spontaneous. And external में change है तो paratonic और tactic movement हो जाएगा, which is also known as induced movements. Yes, done everyone? Anyone still doing? Take your time, just let me know once you're done. Done everyone? Can I move ahead?
So let us start with the very first one, that is movement of locomotion. As I've told you, movement of locomotion are the movements of whole plant body or plant cell or cytoplasm. And under movement of locomotion, first we are going to discuss about autonomous movements, which is because of some internal stimulus. And they're also known as spontaneous movements. So under autonomous movements, there are three categories: ciliary, amoeboid movement, and cyclosis. Just note it down and then I will show you and I will discuss this with you. Euglena, बच्चा euglena is not a plant. So euglena example नहीं आएगा. Yes, वहाँ पे cilia होते हैं, but euglena won't be considered here because euglena is not a plant. AKA is also known as. AKA stand for also known as. Done writing? Ciliary movement, बच्चा. Ciliary movement, as the name suggests, it must be the movement due to presence of cilia और flagella. जैसे बहुत सारे algae हैं, उनमें present होते हैं, उनके cell के surface पे present होते हैं cilia. There are fine hair-like structure, as you can see in the image as well. Here. So Volvox, it is a colony of Volvox. Volvox is a colonial algae. Okay, and उस पे you can say hair like tiny hair like structures हैं उसके surface पे, all around the surface. So जब ये move करते हैं cilia, the whole colony can move from one place to another. So पूरा algae का body move कर रहा है ना from one place to another. So that is why it is no, it is considered under movement of locomotion, because whole algal body, it is moving from one place to another. And since it is because of some internal stimulus, internal changes, क्योंकि cilia it is a part of body only, so उनके cilia की वजह से movement हो रहा है, that is why it is considered under autonomous movement. So very good example is Chlamydomonas and Volvox, both are algae. Chlamydomonas का cell ऐसा होता है, it is somewhat like this, and उसके पास दो flagella होते हैं ऐसे. तो जब ये फ्लैजेला मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो पूरा एल्गी का बॉडी मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज इट इज अ यूनिसेल्युलर एल्गा. सो दिस इज सीलियरी मूवमेंट और द फ्लैजुलर मूवमेंट. बच्चा वॉल्वॉक्स दे लिव इन कॉलोनी, not Chlamydomonas. Chlamydomonas is unicellular alga, not colonial alga. Now second is amoeboid movement. Amoeboid movement आपको सबको पता ही होगा, right? So amoeboid movement, अमीबा की तरह जो मूवमेंट शो होता है, जैसा अमीबा मूव करता है,
उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है काइंड ऑफ फंजाई दैट इज मिक्सोमाइसिटीज, स्लाइम फंजाई है. So it shows a movement that is somewhat like amoeba. And since fungi were earlier classified as plant के अंदर क्लासिफाई किया था, तो अभी ये मूवमेंट को हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं. But now we know that fungi, they are not classified under plant. They are different than plants. So Myxomycetes is a class of fungi. It is slime fungi. So इसमें जो movement होता है, it is because of बच्चा plasmodium, naked plasmodium, it moves by producing pseudopodia. See, plasmodium is a type of protista. एंड वैसे ही मूवमेंट शो होता है अमीबा में, वैसे ही मूवमेंट शो होता है स्लाइम फंजाई में. उसमें होता है क्या बच्चा, पूरा प्रोटोप्लाज्म मूव करता है. प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. so amoeba ka this is cytoplasm, this is nucleoplasm. They both together, the whole part within the cell, it moves. And with this, the whole part, the whole amoeba or the whole part of slime fungi or plasmodium, it move from one place to another. Naked plasmodium, you can say it is it is the one that doesn't have any wall around it. So that is amoeboid movement. जैसे अमीबा का मूवमेंट होता है, उसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म उसकी बॉडी के साथ मूव करता है. And cyclosis, the third one, it is the movement of cytoplasm within a cell, also known as protoplasmic movement or protoplasmic streaming. तन्मय बच्चा, plasmodium is kind of protista. And movement of cytoplasm within a cell is also known as protoplasmic streaming, that occurs in Cara, Hydrilla, Vallisneria. तो इसमें क्या होता है बच्चा, as you can see in the image as well, सिर्फ cytoplasm move करता है. The whole cytoplasm, it moves within the cell. And because of this cytoplasm movement, several things can be transported from one part of the cell to another part. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीजों को जाना है, एंजाइम्स को जाना है, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स को जाना है. So because of this movement of cytoplasm within a cell, these things can be transported from one place to another. So this type of movement, it is also known as protoplasmic streaming. It is known as cyclosis. It is called cyclosis. Cell can move, bacha. Cell can move. बच्चा साइक्लोसिस की वजह से पूरा सेल थोड़ा सा मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. And the cytoplasm, it can move in both the direction, clockwise as well as anti-clockwise. दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. So this is autonomous movement. Are you done with writing? Let me show you some videos on it, so it will be more clear. Of course, cyclosis won't considered as movement of locomotion
टोटली क्योंकि पूरा सेल दूसरे सेल एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए साइक्लोसिस यूज नहीं कर रहा है. बट एज आई हैव टोल्ड यू, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में it can be a movement of cytoplasm as well. So here the cytoplasm is moving, that is why we have considered it under movement of locomotion. But of course इसको cell use नहीं करेगा from to go from one place to another, just like that. Okay, so don't get confused. So just let me show you. Hold on. See, these are the cilia, fine hair-like structures that are present in Volvox colony. Volvox is a type of alga and it is a colonial alga. बहुत सारे cells एक साथ colony में रहते हैं. जैसे societies में हम लोग के flats होते हैं, वैसे इनके अलग अलग cells होते हैं. They live together and they have fine hair-like structure जो help करते हैं in the movement of this colony from one place to another. So as you can see, fine hair-like structures, they are present on the surface of the colony and they help in the movement of this colony all together. Okay? Clear to everyone? Now, second type was, this one is not opening. Let me open it. That amoeboid movement. So amoeboid movement is generally आपने देखे होगा amoeba कैसे move करता है. It is basic movement, amoeboid movement. Basic amoeboid movement जैसे amoeba move करता है. And this with this amoeboid, when amoeba is showing a movement या कहीं पे भी amoeboid movement होगा उसके साथ पूरा protoplasm move करता है उसका. So the whole body, the whole protoplasm moves. So this is classified under amoeboid movement. It is an actual view under the microscope. Okay, so this was about amoeboid movement. And the next one is protoplasmic streaming or cyclosis. So see, the cytoplasm here, the protoplasm is being moved. And because of the movement of protoplasm, ये सब move कर रहे हैं cells. And within a cell, these are some kind of plastid, you can say. Plastid bearing. Because they are all green in color, ना, तो chlorophyll present है. So because of this, various things. इसमें बच्चा cytoplasm आपको दिखाई नहीं देगा. It is, of course, it is not colored. तो उसके वजह से इसमें सब salts mixed होंगे, इसमें storage products mixed होंगे, इसमें enzymes mixed होंगी. So because of this protoplasmic movement, the things can move from one place to another. See how beautifully it is moving. Clockwise, anti-clockwise कैसे भी move कर सकता है. Right? Yes. Is it clear to everyone?
All these three movements. Ciliary movement is because of cilia, amoeboid movement because of amoeba-like movement. जनरली इसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म मूव करता है, एंड साइक्लोसिस में भी द साइटोप्लाज्म मूव. So these are three types of autonomous movements. अक्षत बच्चा, that will depend कि आपके एक पर्टिकुलर चीज को आपको कहाँ पहुंचाना है, and it has various factors involved. Yes, that liquid is cytoplasm only. Now the second type, that is paratonic or the tactic movement. As I've told you, paratonic or the tactic movements, these are the movements because of external stimulus. And that is why they're also known as induced movements. They're also known as induced movements. So in this category, we are going to study about chemotactic, phototactic, and thermotactic. So as the name suggests, chemotactic will, of course, it will be a movement in response to a chemical stimulus. Phototactic, photo word is for light, and this movement, so this phototactic movement has to be a movement that is in response to light stimulus. And thermotactic is something related to heat or temperature. So chemotactic movement, phototactic movement, and thermotactic movement. Chemotactic is movement in response to chemical stimulus. Phototactic movement in response to light stimulus. Photo word is for light, and thermo word is related to temperature. So movement in response to heat stimulus. So chemotactic का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चा, एंथ्रोजॉइड्स एंड ब्रायोफाइट. एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं इसके लिए तो पहले पता होना चाहिए. व्हाट आर एंथ्रोजॉइड्स? anyone ever heard about enterozoites? Anther is different. Enterozoites are बच्चा, yes, they are male gametes. They are male gametes. Bryophytes में जो male gametes होते हैं, they are actually known as enterozoites. It is just another term, another terminology for spermatozoites. बच्चा, it is chlamydomonas only. दोनों जगह chlamydomonas ही है. Spelling थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है. It is chlamydomonas only at both the places. Chlamydomonas, okay? Spelling I think थोड़ा सा error हो गया. It is chlamydomonas only. So yes, antherozoites are male gametes in bryophytes. And what happens during sexual reproduction in bryophytes? Bryophyte is a category of plant. And bryophytes में जब sexual reproduction होता है, उस time पे what happens? The female gametophyte, जो female होता है gametophyte, जिससे female, that is the one that is carrying egg, वो क्या करता है? Chemical release करता है. It release some certain chemicals. Chemicals can be in form of sugar, carbohydrate के form में होते हैं. और वो chemicals, these chemicals, they will be sensed by this antherozoites. और जैसे एंथ्रोजाइट्स उसे सेंस करते हैं, they start attracting towards the female gametophyte. So male gametophyte क्या करता है? वो water में ये male gametes release कर देता है, and these male gametes now again will swim and go towards the female gametophyte in order to do sexual reproduction. So this movement, that is because of some chemical stimulus that was being released by the female gametophyte.
So it is known as chemotactic movement. And since whole anthrozoite, पूरे जो ये gametes हैं ये move करते हैं, see they are being released and they will then enter inside female gametophyte. मेल गैमेटोफाइट से रिलीज होते हैं, स्विम करके वाटर में फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाते हैं, and they are attracted because of some chemicals that was being released by the female gametophyte. That is why they are classified under chemotactic movement. Phototactic movement because of response to light stimulus. ये towards the light भी हो सकता है और away from the light भी हो सकता है. It can be positive, it can be negative. And many kinds of algae, they show this kind of movement like Chlamydomonas. Chlamydomonas के केस में क्या होता है बच्चा, ये लाइट के से दूर भागता है. बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी तो क्या होगा, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट? तो वो क्या करता है, वो शेडी प्लेस में आ जाता है. जैसे ही बहुत ज्यादा लाइट इंटेंस होती है, इट कम्स इनटू द शेडी प्लेट, एंड अगेन बहुत ज्यादा शेडी हो जाता है तो वापस लाइट की तरफ चला जाता है. So positive and negative both movements can be shown. So this is phototactic movement, that is because of light, in response to light stimulus. And the third one is thermotactic. यूग्लिना को बच्चा कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी. अगर आप प्लांट की स्पेसिफिकली बात करो तो यूग्लिना मत करना, अगर सिर्फ प्लांट्स का एग्जांपल है बस. बट यस, यूग्लिना आल्सो शोज दिस फोटोटैक्टिक मूवमेंट. बट अगर सिर्फ प्लांट्स की बात करोगे तो यूग्लिना नहीं आएगा. ओके. Now thermotactic movement. These are the movement in response to heat stimulus. Again shown by Chlamydomonas. बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में भी नहीं रह पाता है क्लमाइडोमोनास, एंड बहुत ज्यादा इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज वेरी हाई तब भी नहीं सस्टेन कर पाएगा. सो इट लिव्स इन मॉडरेट टेम्परेचर वाटर, जहाँ मीडियम टेम्परेचर होता है. सो बहुत ज्यादा ठंडे पानी में रखोगे तो मीडियम की तरफ मूव करेगा, एंड अगर बहुत ज्यादा गर्म में रखोगे, हॉट एनवायरनमेंट में रखोगे, तब भी वो मीडियम की तरफ मूव करेगा. सो इट विल बी बिकॉज ऑफ temperature. The movement is because of temperature, heat stimulus, and that is why it is known as thermotactic movement. बच्चा फोटोटैक्टिक और थर्मोटैक्टिक को समवॉट सम वे में आप रिलेट कर सकते हो, बिकॉज लाइट ज्यादा होगी तो हीट इंटेंसिटी बढ़ेगी, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी. तो थर्मो इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, फोटो में आप लाइट ही कंसीडर कर रहे हो. ओके. डन राइटिंग? Let me know once you are done. So paratonic and autonomous movement में, paratonic में you can see the stimulus is outside of the body of organism. केमिकल कहीं बाहर से रिलीज हो रहा है, लाइट बाहर से आ रही है, टेम्परेचर बाहर एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएट कर रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज, दीज आर पैराटोनिक और टैक्टिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस. व्हाइल ऑटोनॉमस मूवमेंट में जो भी हो रहा था वो सब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही हो रहा था.
Done writing? So we have discussed the very first, I think the very first column and the second column. This much part. Okay, so we have discussed movement of locomotion here. Now we are going to start with movement of curvature. So movement of curvature, as I've told you, these are the movement of plant parts. इसमें पूरा plant body या cytoplasm पूरा नहीं move कर रहा है. Only certain plant parts will be moving. This type of movement is known as movement of curvature, in which we are going to again start with autonomous movement first. That is due to some internal stimuli. And again आपको लिखने की जरूरत नहीं. Autonomous movements you already know. It is also known as spontaneous movement. And इसमें the very first category is variation movement. Autonomous movement में the very first category is variation movement, which is shown by a plant known as Desmodium gyrans. Shown by a plant known as Desmodium gyrans. So if you just look at the image of this plant bacha, you will see there is one terminal leaflet here and two lateral leaflets are present. So in total 3 leaflets present होते हैं. Movement, variation movement जिसमें Desmodium gyrans is a example. इसमें बच्चा 3 leaflets present होते हैं in total. Yes, Tanmay. Terminal leaflet, one single large terminal leaflet and 2 lateral leaflets. Now these 2 lateral leaflets, what does this do? They show some rhythmic movements during the day. During the daytime, what does it do? They show some rhythmic movement. These lateral leaves, they move up and then again move back. And again then move down finally. So up and down, ऐसा movement वो लोग show करते रहते हैं. This movement is because of the variation in turgor pressure of certain sensitive cells known as motor cells. So in leaves में बच्चा क्या present होता है? कुछ cells present होते हैं known as motor cells. In motor cells में because of difference in turgor pressure that we study in this phloem में हमने turgor pressure discuss किया था ना. जैसे एक cell का turgor pressure डाउन होता है तो दूसरे सेल से उसके अंदर चीजें आ जाती हैं. ऐसे बच्चा एक सेल का टर्गर प्रेशर यहाँ पे मोटर सेल का डाउन होगा तो दूसरे सेल में वाटर विल मूव. देन अगेन इस सेल का डाउन होगा तो नेक्स्ट सेल में इट विल मूव. सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन टर्गर प्रेशर व्हाट विल हैपन, जिस सेल में से वाटर निकल जाएगा वो क्या करेगा, वो श्रिंक हो जाएगा. एंड जैसे ही वो सेल्स श्रिंक होंगे द लीफ इट विल बेंड डाउन. एंड जैसे ही उसमें टर्गर fill हो जाएगा, उसमें water fill हो जाएगा, they will again the cells, all cells will become filled with water. वो फिर से move, they will move upward. तो ये movement show करते हैं Desmodium gyrans. That is because of variation in turgor pressure inside the motor cell. अब Desmodium gyrans क्यों ये movement show करता है? Why? What do you think? Why the leaves move upward and then again downward? Why they are showing this movement? Durga, to maintain equilibrium in regarding to what? बच्चा टू लीव्स क्या करते हैं? लीव्स का मेन फंक्शन क्या है? फूड, फोटोसिंथेसिस. यस. तो लाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कितना लाइट प्लांट को अभी चाहिए, कितना अभी नहीं चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए. सो टू ऑप्टिमाइज लाइट कंडीशन they just show this movement. Okay. And this bacha Desmodium gyrans plant, it is also known as telegraphic plant. इसे telegraphic plant भी बोलते हैं and it is also known as dancing plant.
because जब ये up and down movement show करता है, it somewhat looks like it is dancing. And because of this special character, it can also be used as an ornamental plant in gardens. Bacha, the name of the plant is Desmodium gyron. It is written here on your screen in front of you. It is also known as telegraphic plant and dancing plant. बच्चा it shows rhythmic movement to optimize light condition. बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो लीफ क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड हो जाएंगी. तो जैसे ही लीफ डाउनवर्ड मूवमेंट में हो जाएंगी, लाइट क्या होगा, लाइट पास हो जाएगा ऊपर से ही. सो बहुत ज्यादा लाइट इस पे डायरेक्टली नहीं पड़ेगा. एंड अगर इसे बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होगा तो ये अगेन इट विल मूव अपवर्ड so that light will fall directly on it. Okay, so to optimize light condition during photosynthesis, it shows this movement. Anvi, is it clear? Desmodium gyrans is the scientific name. The other name could be telegraphic plant or the dancing plant. बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है. It takes some time, but yes, during daytime you can observe. Let me show you a video on it. Are you done writing? And please remember, only the lateral leaflet shows this kind of movement, not the terminal one. Okay, lateral leaves show karte hain. So just hold on. Let me find out a video on it. Movement. See, the lateral leaflets are moving. जैसे मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे. Of course, ये वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके रखा गया है, तो इतना जल्दी जल्दी शो नहीं करते, बट यस यू कैन ऑब्जर्व. Yes, Anvi, touch me not will not be considered here. Touch me not will not be considered here. We will discuss about that also, and why we are not considering that touch me not plant here. We will discuss that. Don't worry. Clear हो जाएगा, okay? So this was about Desmodium gyrans. बच्चा touch me not के बारे में मैं बात करूंगी when we will come on to that point. Yes, mimosa में भी turgor pressure होता है, but because that is because of external stimulus. That is different story. आप बाहर से touch करते हो, बाहर से कुछ shaking movement होता है, तब उसमें होता है change. So that will not be considered under autonomous movement. Okay, so we are going to discuss about that also. वो भी हम लोग discuss करेंगे. Now second category is growth movement. Under autonomous movements only, the second category is growth movement. It is because of due to unequal growth in different part. It is because of due to unequal growth in different parts of an organ, permanent movements.
So growth movements is because of unequal growth in different parts of an organ. एक पर्टिकुलर प्लांट के ऑर्गन में different parts पे unequal growth हो रहा है, that are known as growth movement. I'll give you some example, it will be clear. The categories are hyponasty, epinasty and nutational movement. Hyponasty, epinasty and nutational movement. I'll give you a very common example. See, hyponasty, hypo means below, lower surface, and epinasty is upper surface. So what happens जब flower को बच्चा close होना होता है, okay, flower को लेस से close होना है, तो वो क्या करेगा, अपने लोअर सरफेस पे अगर बहुत सारी ग्रोथ शो कर देगा, जैसे दिस इज द प्लांट, अगर उसके यहाँ पे लोअर सरफेस पे ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ultimately what will happen, it will lead to, yes, this will lead to closure of that particular organ or part of the plant. जैसे फ्लावर के सेपल्स में होता है, पेटल्स में होता है, तो उसके वजह से what happens, the flower it can get closed. और अगर अपर सरफेस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा ऑन द अपर पार्ट, देन द पेटल विल ओपन, नीचे की तरफ बेंट हो जाएंगे ये, एंड दे विल स्टार्ट ओपनिंग, राइट. लेट्स से दिस इज द पार्ट, ये इनिशियल पार्ट था फ्लावर का. सो अगर इसके लोअर सरफेस पे ग्रोथ हो गया तो इट विल मूव लाइक दिस एंड इट विल गेट क्लोज्ड. एंड अगर इसके अपर सरफेस पे बच्चा ग्रोथ हो गया, देन इट विल लीड टू an open case of flower, right? So because of unequal growth in different parts, these movements are known as growth movement, because it is leading to growth of the plant. भाई पहले फ्लावर बर्ड क्या होती है, वो क्लोज होती है, पहले फ्लावर बर्ड क्लोज थी, ऐसे थी, फ्लावर ब्लड ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट थी. अब उसमें अगर बहुत ज्यादा लोअर सरफेस में ग्रोथ हो जाएगा, तो इट विल टाइटली क्लोज द फ्लावर. अनइक्वली तो हो रहा है बच्चा, अगर अनइक्वल मीन्स अगर अपर सरफेस पे हो रहा है तो लोअर सरफेस पे नहीं होगा, एंड इफ इट इज हैपनिंग ऑन द लोअर सरफेस तो अपर सरफेस पे नहीं होगा. सो इट इज अनइक्वल ग्रोथ. आई गिव यू अनदर एग्जांपल, दैट इज न्यूट्रिशनल मूवमेंट. न्यूट्रिशनल मूवमेंट बच्चा ये होता है एपेक्स ऑफ स्टेम और एनी ऑर्गन दैट ग्रोज इन zigzag मैनर, जैसे टेंड्रिल में होता है. सो टेंड्रिल क्या करता है, टेंड्रिल लाइक लेट्स से दिस इज द स्टेम और यहाँ से ग्रो कर रहा है और उसके एपेक्स पे ग्रोथ शो होगी. अब एपेक्स पे जब ग्रोथ शो होती है, व्हाट हैपेंस, टेंड्रिल के केस में बच्चा क्या होता है, इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ द पार्ट दैट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस एपेक्स. ठीक है, लेट्स से ऐसे मूव कर रहा था लाइक दिस, लाइक दिस. अब यहाँ एपेक्स पे इसके टिप पर जैसे आपने एक सपोर्ट दिया, ये क्या करेगा, इन ऑर्डर टू ग्रो और इन ऑर्डर टू हैव सम सपोर्ट, ये अपने आप को ग्रो करेगा और इसके अराउंड रैप कर लेगा. देन अगेन सम पार्ट, दिस मच पार्ट विल कम इन कांटेक्ट विद दिस सपोर्ट, तो अगेन ये अपने आप को वहां से रैप कर लेगा. और रैप कैसे करेगा, वहां पे बहुत सारा सेल ग्रोथ करके, so that that particular part of plant will grow and wrap around on the support that we are providing to the plant. So in this way it will start coiling around the support, whatever support you are providing. So this is known as nutational movement. That is because the growth is happening in the apex of any stem or any organ, and it shows zigzag manner. Spiral means बच्चा spiral movement is somewhat like this, because यहाँ पे सपोर्ट होगा ना, उसके अराउंड ये अपने आप को रैप कर लेगा. ओके बच्चा, टेंड्रिल देखा होगा ना,
That is, it is actually a modification of stem. और लीफ या पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. पी में से, पी प्लांट में देखा होगा. उनका फंक्शन टेंड्रिल का जनरली फंक्शन होता है, दे आर स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट और अटैचमेंट. They just twine around a particular support or a host organism. Yes, to provide support to the plant. So this is nutational movement. बच्चा पी प्लांट में देखा है टेंड्रिल्स होते हैं. See, this is a tendril. So जैसे ही बच्चा सपोर्ट इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, लेट्स से ये ऐसे ग्रो कर रहा था. दिस इज अ पी प्लांट. और पी प्लांट में से लेट्स से दिस इज अ पी प्लांट. ओके. एंड पी प्लांट में से ये टेंड्रिल है. अब टेंड्रिल के पास जैसे ही बच्चा सपोर्ट आएगा, व्हाट विल हैपन, इसका एपेक्स बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करेगा एंड इट विल कॉइल अराउंड दिस सपोर्ट so that it can grow upward and upward to have more and more light in order to perform photosynthesis or in order to grow. So this is what is nutational movement. सिर्फ एपेक्स पे ग्रोथ हो रही है, ओनली टिप पे ग्रोथ हो रही है, एंड that tip is actually growing and growing and growing around a particular support, and that is how it is moving upward. नो बच्चा, इसमें स्टेम के एपेक्स पे, स्टेम के टिप पार्ट पे सेल का ग्रोथ हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल, और यू कैन से सेल ग्रो कर रहे हैं, सेल डिवाइड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवीजन ऑफ सेल द ग्रोथ मूवमेंट इज अकरिंग. सो सीमलेस इंटरनल हो गया ना, चेंज इज इंटरनल. हमारे बॉडी में जैसे मेरे एक फिंगर के टिप पे बहुत सारा ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज इंटरनल स्टीमलेस, इंटरनल चेंज. यस, न्यूट्रिशनल मूवमेंट जहां पे भी टेंड्रल प्रेजेंट होंगे, मनी प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं, इवन कुकुरबिटेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, मींस कुकुम्बर में, पंपकिन में, इन सब में. ओके. होल्ड ऑन. So are you done with this slide? Done, everyone? Yes, Ahan. Yes, एहतिशाम बच्चा, क्लाइंबर्स, ग्रेप वाइन्स जो होते हैं वो टेंड्रल्स का ही मॉडिफिकेशन है. जब ये मूव कर रहेंगे अपवर्ड साइड टू क्लाइंब बिकॉज ऑफ अ सपोर्ट, इट इज नोन एज क्लाइंबर. क्रीपर्स क्या करते हैं, वो जनरली ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, they just move on the ground, so they are classified as creeper. Yes, Ahan, was it sorry, what is it? Anything? Ahan, if you have any doubt, you can write down in the chat section, bacha.
So hyponasty, epinasty, nutational. Is it clear? Hyponasty, when the growth is occurring on the upper surface of the plant part. Epinasty, when it is occurring on the lower, epinasty is upper surface, hyponasty is lower surface. And nutational is when it is occurring on the tips. That is tendril movement. Now the next part in this one is paratonic or the tectic movement. This was growth movement. And autonomous movement में बच्चा variation movement and growth movement आ गया दो. Now we are starting with the paratonic or the tectic movement. Yes, this one is very easy. This you must have heard about it earlier also. Paratonic or the tectic movements because of external stimulus. Tropic, इसमें the first classification is tropic movement. Movement brought about by more growth on one side and less growth on the opposite side of the plant. And it is happening because of external stimulus. Right? तो इसमें बच्चा phototrophic, geotrophic, chemotrophic, thermotrophic, thigmotrophic, and hydrotrophic. These are generally trophic movement, which is also known as tropism. Yes, these trophic movements, they are also known as tropism. So if the stimulus is light, it is known as phototrophic. If the stimulus is gravity, it is known as geotrophic. Stimulus is chemical, it is known as chemotrophic. If the stimulus is temperature, it is known as thermotrophic. If the stimulus is touch, it is known as thigmotrophic plus haptotrophic. Haptotrophic is a word, please note it down. Haptotrophic. Haptotropism is just another word for touch stimulus. Yes, bacha. Likewise, geotropic is also known as gravitropism or gravitrophic movement. It is also known as gravitropism. Hydrotropic is because of water. So इसके examples भी बहुत easy हैं. Phototrophic light, तो shoot by, we know stems are positively phototrophic because they move towards the light. And roots are negatively phototrophic. बच्चा touch me not plant कहाँ आएगा? I will tell you. Please wait. We will discuss that. Clear हो जाएगा क्यों, कहाँ पे, कैसे आया है. Okay. So geotropism, positive geotropic, root are positively geotropic because they grow towards the gravity, and shoot are, but a shoot should be negatively geotropic. यहाँ पे please correct it. It is negatively geotropic. Shoots are negatively geotropic. They are not positive. I didn't change it. So shoots are negatively geotropic because they grow opposite to gravity. Chemotropic में बच्चा what happens? Chemotropic में stimulus is chemical and movement of pollen tube towards ovary. What happens? This is female part in the plants. Right? Stigma, style, and ovary. Together known as a pistil or a carpel. तो इसमें जब बच्चा pollen grain land करता है तो it starts moving towards the egg, and that is because of some chemical that is being released by this ovary. तो pollen grain का movement, और generally pollen grain से एक pollen tube release होती है. Yes, I'm just discussing it right now and we are going to stop. Just completing this much part. तो बच्चा pollen grain से क्या होता है? pollen tube release होती है, and that pollen tube, it leads the pollen grain towards the egg that is present inside the ovary of the plant.
So this particular movement is known as chemotropic. Now thermotropic mein there is a plant known as rhododendron. तो रोडोडेंड्रॉन के केस में बच्चा क्या होता है, जब बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है ना, तो वो अपने लीफ को पूरी तरह से बेंड कर लेते हैं, पूरी तरह से ऐसे बेंड कर लेते हैं. पहले ये लीव्स ओपन होती हैं ऐसे, बट लेटर ऑन जैसे ही टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, इट बेंड्स डाउन इट्स ऑल लीव्स. सो दिस इज थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट. थिग्मोट्रोपिस, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटेसिस फैमिली. एंड हाइड्रोट्रॉपिक में बच्चा क्या आता है, स्टीमलेस वाटर है, जैसे रूट्स ऑफ प्लांट्स. किसी भी प्लांट का जो भी रूट होगा बच्चा, इट विल मूव टुवर्ड्स वाटर in order to absorb more and more water. So roots of plant, they show hydrotropic movement. Done with this much part? तो बच्चा थिग्मोट्रोपिज्म एंड न्यूट्रिशनल मूवमेंट में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? न्यूट्रिशनल मूवमेंट में आप सपोर्ट प्रोवाइड अगर कर दोगे, सो इट विल स्टार्ट शोइंग थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट. अदरवाइज अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, इट विल कीप ऑन जस्ट शोइंग zigzag मैनर में वो ग्रो करता जाएगा. इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर लाइट, वो ग्रो करता रहेगा, एंड दैट इज न्यूट्रिशनल मूवमेंट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अगर आप बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड कर दोगे और वो इट विल स्टार्ट क्लाइंबिंग, then it is classified under thigmotropism. When it is not provided with any support externally, and it is just showing nutational movement or growth in the apex of the tip, or you can say apex or the tip of the stem, it is known as nutational movement. Okay. So these are some examples. See, this one is phototropic, right? This is geotropic. This is chemotropic. Pollen tube is growing towards the ovule. This is hydrotropic. Roots are growing. This is hydrotropic curvature. Roots is the root. It is growing towards the water. Rhododendron is this one. This is rhododendron. Sorry, leaves dekho, they are the leaves. Yes, the leaves, they are drooping. And this one is thigmotropism. So एक support मिल गया, उस support के around the tendril it is growing. अगर ये support नहीं होता और सिर्फ ऐसे zigzag movement होती, then it is classified as nutational movement. Clear है everyone? So we are done for today. Those students who have doubts can stay, otherwise other can leave. Bye bye, take care. Then में बच्चा cucurbitaceae family is this cucumber family. Ahan, please wait. Some students are still writing. Let them complete. I will show you the last slide. Yes, I will send all these things in group. Don't worry. Bye, Tanmay. Take care. Here it is, Ahan.